मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 जियोग्राफी। चलिए शुरू करता है इस चैप्टर को। बिल्कुल आसान चैप्टर है, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा इतना टॉपिक नहीं है, 13 पे इसका चैप्टर लग रहा है, लेकिन इतना है नहीं इसमें, ठीक है। मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा लूँगी एक एक करके, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे भी कितना बड़ा चैप्टर हो, मैं आपको इसको बहुत सिंपल वे में करवा लेती हूँ, ईजी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सुनो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर का नाम है, जिसमें यहाँ से शुरू होगा आपका व्हाट इज़ मैन्युफैक्चर। ये जो दिया होता है ब्रैकेट में साइड में, ये तो आप देख लिया करो, ठीक है। ये एक एग्जांपल दिया होता है जिसमें दियास की पैकिंग हो रही है यहाँ पर दीपावली के लिए, तो ये सारी तो आप देख लिया करो खुद से। अब हम शुरू करते हैं व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। So manufacturing involves that what manufacturing involve producing good in large quantity by processing raw material. तो manufacturing involve producing good in the large quantity by the processing raw material into the more valuable product. What? Into the more valuable product. It is a secondary sector activity where the raw material goods are transported into the finished product. अच्छा बच्चों, बताओ मेरे को कि हमने चौथे चैप्टर में क्या पढ़ा था। हमने चौथे चैप्टर में पढ़ा था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब सेकेंडरी एक्टिविटी। अब हमने जियोग्राफी में हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स का जो है ना, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टरी और जो है टर्टायरी सेक्टर के मतलब जो एक्टिविटीज़ थी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। ये 3 सेक्टर थे हमारी इंडियन इकोनॉमी के। तो अब वो 3 सेक्टर्स को डीपली पढ़ रहे हैं हम। तो पहले एग्रीकल्चर में हमने प्राइमरी सेक्टर को डीपली पढ़ लिया, अब इधर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाले चैप्टर में सेकेंडरी सेक्टर को डीपली पढ़ रहे हैं, ठीक है। वही है कह रहा है, ठीक है, कि सेकेंडरी सेक्टर को हमें डीपली पढ़ना है। तो ये एक सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। सिंपल डेफिनेशन में लिखा है, मैं डेफिनेशन रिपीट करती हूँ। डेफिनेशन पर मेरे वॉइस पे फोकस करिए। मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी बाय द प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। इट्स अ सेकेंडरी सेक्टर activity where raw goods are transported into the finished product. Okay, now importance of this manufacturing. What are the importance of this manufacturing? So there the importance is given that manufacturing is a crucial economic development. It is a modern by the producing the tools and the services. Industrial development help reduce unemployment, poverty and the regional diversity, and manufacturing adds the value to the raw material, contributes its property. Okay, now read out the points here. Manufacturing industry not help in modernization agriculture. It is just formulate backbone of our economy. They reduce the heavy dependency of the people agriculture income and provide them jobs at the secondary and tertiary sectors. Okay, industrial development of the coordination from the eradication of the unemployment and the poverty from a country. This was the main philosophically behind the public sector industry and join the sector when stated in India. It was also aimed to be bring down the regional deficit by the existing industry in the tribal and the backward area. Export of the manufactured goods expands the trade and commerce and bring much needed for the foreign exchange countries and transport their raw material into the wide variety finished goods of the higher value are proposed. India's possibility lies in increase and defragmenting in manufacturing industry as quickly as possible. Agriculture and industry are the not exclusive of the each other, and they have to be moved hand in hand. For the intense the agro industries in India, they have given a major boost to the agriculture by raising
These productivity, they depends on the latter from the raw material and the soil, the irrigation pumps, fertility, pesticides, plastic, PVD piping machine and tool, etc. Okay. So these here we see that the raw material, the labor, the capital, and about the factors. The what are the factors that affect on it? Okay, now there are different types of industry that's we have to be see about that. चलिए देख ही लेते हैं जहाँ पर भी हैं हम. पहले पेज में थे ना, यहाँ से देखते थे हम कि फैक्टर्स कौन कौन से अवेलेबल है. यहाँ पर देखो, फोकस करो. रॉ मटेरियल पोस्टर्डिंग टू स्टोर्स टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लेबर अवेबिलिटी ऑफ द सिल्क एंड द चीप लेबर, कैपिटल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी फॉर द इंडस्ट्रियल लोकेशन, पावर क्या रिलीजेबल एंड द अफोर्डेबल एनर्जी फॉर द सप्लाई, इट इज अ पावर. Now what are the markets? So the markets are the early accessible to the market, the government policy are the favorable policy, and what are the classification of the industry. Let's see, have to be see here. The four classification of the industry are classification on the base of the raw material, okay, then which is on the argo based, mineral based industry. Okay, on the base of raw material use, so cotton, woolen, jute, silk, textile, rubber, sugar, tea, coffee, eatable oil are from argo based industry, agriculture based industry, and mineral based iron, steel, cement, aluminum, machine tool, and petrochemicals. Okay, so now here what are the basic or the key industry those supply products raw material. Okay, example iron, steel, copper. Okay, industry provide obviously. Now consumer industry produce good directly by the consumer, sugar, toothpaste, paper. Let's, okay, we know about it, all about it, we know this is our daily life or daily routine. Now on the base of investment or the capital, small scale industry is defined as the maximum investment allowed on the excess test of a unit. A limit have to be changed period of time. At the present maximum investment allowed in rupees 1 crore on the base of ownership, public, private, joint sector, cooperative sector. We all know that the public sector is bail, sale, etc. Okay, are cooperated by the government agency. Now private sector is industry owned, operated by the individual or a group like Tisco, by Jail, Auto Limit, Dabar Industry. Okay, now joint sector में Oil India Limited, jointly owned by the private and public sector, cooperative sector industry. Amul is the best example. Coir industry in Kerala. Now Maharashtra, sugar industry in Maharashtra. So these are the cooperative sectors. Okay, now heavy industry such as iron and steel. Light industry have the raw material and produce the light goods such as electricity goods industry. Okay, activity you have to do yourself, classify the raw material given and classify which industry. Okay, activity you have to be do by yourself, you have to be done by yourself. Okay, now we have to be see about the argo based industry. Okay, what are the argo based industry? So the industry can based on agricultural raw material is called argo based, the industry that based on the agricultural raw material. Okay, now here raw fabric production, yarn spinning, fabric weaving, knitting, garments dyeing, and the fishing, garment manufacture. Okay, now this is here what the given the value additional into the textile industry. If the cotton is grown in argo based industry, now what are the value added in the here in this cotton textile industry or the textile industry, what the value is added. So what is argo based? So argo based is based on agriculture raw material is known as argo based industry, and the value additional in the textile industry where are these. Okay, now what is textile industry? So textile industry or the cotton textile industry are what? The industries are what? The industries are what? Say now the jute textile industry. Okay, now different types of industry we have to be talk about that.
So in this type of industry that you have to be read about it, this you have to be read the paragraphs here, okay. And a simple thing ki what we have to be study, location, one thing, location ke सारे महाराष्ट्र गुजरात तमिलनाडु weaving highly, okay. So here about the industry where the paragraph is given, so you read the paragraph. This paragraph made your question describe about the this industry, so you can be follow this, you have to be right about it, okay. Let's I am read also about it. Textile industry. The textile industry occupy the unique position in the Indian economy because it contributes significantly to the industrial production, employment generation, and the foreign exchange of the earning. Okay, it is also the industry in the country which is self-reliant and the complete in the well chain will that the raw material to the highest value added products, okay. Now what is the cotton textile industry? It is ancient India. Cotton textile were produced to the hand spinning and the handloom wearing the technique. After the 18th century the power looms come into the use, okay. Our traditional industry suffered in the setback during the colonial period because they have could not complete with the mile made and the cotton England, okay. Now here what is the jute textile industry? India is the largest producer of the raw jute and the jute goods, and they were have to be sent for such a place, okay. Send for such a place and expert that the most of the mills were located in the West Bengal and the banks of the Hooghly river in the northern Blades, okay. So what is this? This is the do you know, and what more you have to be study about it. And just to point, you have to be also see that first successful textile was established in Mumbai 1854, okay. Now here map work, all map work we see after that. Now what is the mineral based industry, okay. So here what is the mineral based industry, and in this we have to be study about it, all about the mineral based industry, okay. We have to be see and study about it. So mineral based industry, it means that the industry that are used minerals and the metals as a raw material. This is called mineral based, okay. Simple thing, okay, use what it used, used the mineral, okay, mineral and metals as raw material, mineral based. नाउ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. बिफोर डेट कि हमारी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना रह गया. कौन सी इंडस्ट्री? ये शुगर इंडस्ट्री. ये आर्गो बेस्ड इंडस्ट्री का टाइप है, ठीक है. इंडिया स्टैंड्स द सेकेंड वर्ल्ड पॉपुलर प्रोड्यूस शुगर बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड़ एंड खंडशरी, ओके. So this location in India is Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Punjab, Haryana, Madhya Pradesh. Okay, this is clear to the point. All children, if you have any doubt, then tell me. Okay, now here what is iron and steel industry? So the iron and steel industry, here we see that the iron and steel industry basic industry, since the other industries heavy, medium and the light dependent on it machinery. Steel it needed manufacture and a variety of energy goods, construction and the material, okay. Now what is the defend medical tech, scientific equipment and the consumer were consumed. So this is iron and steel industry, all about this industry, okay. Now what is about this? This is the figure 6.2, that's tapping metal, stealing pig, plastic and transport of the raw material from the plant to the process, okay. How it make the flow chart can show the process. Let's you all see that the flow chart is can be show the process that how it is. This flow chart is show the process, okay. I will also can check that how it show the process. Let's read out what are these points, the points that we have to be read the such points, okay. Now here transport of the raw material from the plant. Now iron ore, oxide, limestone material were added into the slag is removed. The cotton will be burnt here, okay, and the sag is removed. The sag will what you have to be that it is removed and cut at the heat and the ore. Now pig and iron molten as the material and the iron that produced into it and mold called pig. Now still making pig iron fertile melting
and this is trapping. So this is a process. Okay, next you have to be known that 3 और 2 मार्क द फ्लो चार्ट आपको ड्रॉ करना पड़ सकता है एग्जाम में. बोर्ड एग्जाम की बात करूँ, बोर्ड एग्जाम SST पर बोर्ड एग्जाम पे फोकस कर रही हूँ मैं. बोर्ड एग्जाम 20 मार्क्स ऐसे नहीं आएगा बच्चा, बता रही हूँ तो समझ लो ध्यान से, ठीक है. अब ये जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में है, ये इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको खुद पढ़ना है, ठीक है. आई होप कि सारी इंडस्ट्री के बारे में आप खुद पढ़ लोगे, ठीक है. मैं केवल मेन में बता देती हूँ. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉन इंडस्ट्री, तो इसमें क्या है, आपको तरह तरह की इंडस्ट्री के बारे में दिया हुआ है. फिर इंडस्ट्री पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, या इंडस्ट्री का जो पोल्यूशन होता है वो एनवायरमेंटल को भी क्या करता है, डिग्रेडेट करता है, एनवायरमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है, जैसे कि एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन वगैरह वगैरह. तो क्या इम्पैक्ट डालता है, चलो ठीक है. एयर वाटर पोल्यूशन एंड ये सब के बारे में भी आपको पता है. व्हाट इज़ थर्मल पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशन भी आप जानते हो, ठीक है. तो देखिए सुनिए, एयर पोल्यूशन कहाँ से होता है, इमिस्टेटेड गैसेस के कारण आपका एयर पोल्यूशन होता है. वाटर पोल्यूशन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल वेस्ट, बिल्कुल. थर्मल पोल्यूशन फ्रॉम द हॉट वाटर डिस्चार्ज एंड द नॉइज पोल्यूशन फ्रॉम द मशीनरी. सो दीज आर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज. ओके, नाउ व्हाट इज the controlling degradation. The number one, planting more and more tree is first that you write in any causes that I will telling you. And what are the treatments here? You have to be right. The primary treatment, then mining is used for the processing, recycling, 2 or more sustainability visits. Now harvesting of the rainwater to meet the requirements, treating of the hot water influencing before the realizing dam, rivers, ponds, and the treatment of the induction afflumated can done with the 3 phases. Primary treatment by the machines means this is involve the screening, grading, fluctuation, and the sedimentation. Secondary treatment by the biologically processed tertiary treatment, biologically, chemical and physical process. This involve recycling of the waste. I hope children this is clear to you. Okay, and here our chapter is finished now. Okay, now here about the NTPC shows that how the picture is given of the one plants and the other plant. So this you have to be known about it. You read about it by yourself. Okay, now here exercise you have to be do about by yourself. Manufacturing, about the 2 type of industry, you know that. Okay, and what is other thing, that activity you do by yourself, project work you do by yourself in your class. And you know that the answer in 120 word. Now what is the environmental degradation by industry and how the industry can pollute the environment, we all know that about. Okay, now this puzzle you have to be solved that this is activity, and the activity and the project work you have to be do by yourself. Okay, other activity were also given. आई होप चिल्ड्रन दिस चैप्टर इज क्लियर टू द पॉइंट. अगर फिर भी बच्चा कोई डाउट बच जाता है जो मैंने नहीं समझा है, क्योंकि इसमें क्या है, हर एक इंडस्ट्री के बारे में फीचर्स दिया हुआ है. मैं आपको सारी इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगी, तो फिर आप क्या पढ़ोगे, तो बस आप पढ़ोगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ लोकेशन है, और कुछ कुछ चीज़ें उसकी पॉइंट याद रखना है कि उसका लोकेशन कहाँ है, वो किस पर्पज़ से है, एंड उसमें क्या क्या होता है, एंड वो किसकी इंडस्ट्री है, तो वो सब आप देख लोगे, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो. अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते. और एक चीज़ कि इसके जो मैप वर्क्स है ना, मैप वर्क्स भी आप देख लोगे खुद से, ठीक है. आपको क्या करना है, इसकी मैप वर्क्स, ठीक है, ये मैप वर्क्स. अब मैप्स वर्क याद करने मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि कैसे याद करना है. याद तो आपको करना है, चेन्नई तमिलनाडु में है एक वो, ठीक है. तो मैप वर्क भी आप याद कर लोगे. यहाँ पर कुछ मैप वर्क दिए, जितने मैप वर्क दिए इस चैप्टर के, सो मैप वर्क भी मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ. देखो, मैप वर्क आपको करना है, कुछ इंडस्ट्री के बारे में देखना है, एंड तीसरा काम है एक्सरसाइज करनी है, एक्टिविटी करनी है, प्रोजेक्ट करना है. हालांकि ये तो कवर हो चुकी है काफ़ी चीज़ें जो मैंने बताया, लेकिन फिर भी कुछ है ना तो आप बस बता सकते हो, ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और अगर कुछ भी है बता दो मेरे को कमेंट करके, डाउट वगैरह जो भी हो, ठीक है. निश्चित रहिए, बिना चिंता करें, मेरे को आप सब कुछ बता सकते हो. मैं आपके एग्जाम पर्पज़ के सारे सोशल साइंस के डाउट क्लियर अवश्य करूँगी, ठीक है. थैंक यू सो मच.